Good morning, students. In the last class, we have seen about non-banking financial intermediaries. In that, we have seen what is merchant banking in there and what are non-banking financial institutions. What is the difference between bank and a non-banking financial institutions? Then we have seen about the different types of finance that is provided. It is mutual fund, merchant banking, lease finance, factoring, venture capital finance. Okay, so these are the things we have learned in the last class. Today we are going to start with the sixth chapter, that is development financial institutions. Okay, so this is your sixth chapter of terms 2. Okay, now here डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इट इज़ डिफाइनिंग अ डेवलपमेंट बैंक इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक डिफर इन देयर फॉर्म्स. ओके, जो डेवलपमेंटल बैंक जो है हमारे कंट्री में दे डिफर्स इन देयर फॉर्म. ओके, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ डेवलपमेंट बैंक, but there is a definition. From this definition you will come to know what is a development bank. Now development bank जो है it are those institutions which are engaged in promotion and development of agricultural sectors, अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड अदर की सेक्टर्स. ओके, हमारे कंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स है. ओके, अपार्ट फ्रॉम योर कमर्शियल सेक्टर दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड ऑल, देयर आर अदर सेक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है, फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, देन यू हैव स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो ये सारे जो है ये जो डेवलपमेंट बैंक है वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू डेवलप दैट पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, सो ये कैसे डेवलप करते, दे विल सेट अप अ स्मॉल बैंक्स. ओके, विच विल हेल्प टू डेवलप दिस सेक्टर्स. ओके, देयर आर वेरियस डेवलपमेंटल बैंक्स डिफर्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. ओके, दिस कमर्शियल बैंक जो क्या करते हैं, they run per profit. Okay, commercial bank they will earn the profit and also they will provide services to their customers, but they will charge for them. But this developmental bank जो है they are very different from commercial bank. They will try to develop a particular sectors. Okay, जैसे कि डेवलपमेंट कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, दे विल मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ द पीपल, बट डेवलपमेंट बैंक डू नॉट मोबिलाइज द सेविंग. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चैनलाइज रिसोर्सिव इन प्रोडक्टिव मैनर. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज डेवलपमेंटल institution, which is also known as DFIS. Okay, so in this chapter you are going to learn what is the introduction about development financial institutions, Industrial Finance Corporation of India. These are the developmental banks. Okay, that is IFCI. Then you are going to see what is Small Industrial Development Bank of India, that is SIDBI. Then State Finance Corporation, SFCS. Then National Small Scale Industrial Corporation, that is NSSIDC. And मुद्रा बैंक एंड भारतीय महिला बैंक. ओके, सो इतने सारे बैंक्स, मतलब यू आर गोइंग टू लर्न 6 डेवलपमेंटल बैंक इन डिटेल्स. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, इट विल ट्राई टू डेवलप द पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, सो योर डेवलपमेंट बैंक जो है इट हाउ दे फंक्शंस आर providing long term loans to the industrial concerns, underwriting of shares and debentures, subscribing of equity shares, debentures, promotion of industries, conducting techno-economic survey, market and research, investment research, giving technical, administrative and managerial guidelines, etc. So these are some of the functions of developmental bank. Okay, so you cannot define, so कि एक डेवलपमेंट बैंक को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. Now we will see how it got originated. Okay, वो कहाँ से आया. So the first developmental bank जो है it can be traced from the Soviet General Ed Bell
Belgique, okay, which was established in 1822 in Belgium. Okay, so primary objective क्या था? To finance Belgian industries. Okay, in France these institutions were known as credit mobilizers, which was established in the year 1852 to finance industries in France. Next it came in UK and Germany. So these institutions were their own institutions, which was in the 19th century. For example, UK the merchant banking system जो है provides long term capital need to the economic growth. In Germany, universal banking provides short term and long term capital to German industries. In US, a different variant of development finance came into being. Okay, so these are some of the developmental bank in Germany and UK which originated over there. Okay, so here after the Second World War the concept of development banking was received a worldwide acceptance. Okay, तो धीरे धीरे क्या क्या हो गया, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद स्लोली द सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग. और जैसे जैसे सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग, what happened? There was a need of a development bank. This is how development bank came into existence. Next we will see what are the objectives of development bank. Now जैसे जैसे ग्रोथ होने लगती है, when there is promotion and in this sectors जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और या other key sectors, there is a need of this development banks. Okay, so development bank जो है they will provide इंडस्ट्रियल फाइनेंस कैसे कैसे मिलेगा,